विजयवाड़ा से खबर है। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के इम्तिहानात आज से रियासत भर में शुरू हो चुके हैं। 6,40,000 से ज्यादा तुलबा इम्तिहानात में शरीक हो रहे हैं। इम्तिहानात के लिए 3,415 मराकज़ कायम किए गए, जहां सख्त इंतजाम किए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक इम्तिहानात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए सीसीटीवी निगरानी, मेडिकल स्टाफ और फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए। एनटीआर जिले में भी इम्तिहानात के लिए मुकम्मल तैयारियां की गई हैं, जहां 149 मराकज़ पर 27,000 से ज्यादा तुलबा इम्तिहान दे रहे हैं। जिला कलेक्टर लक्ष्मी शाह ने बताया कि तमाम मराकज़ पर बुनियादी सहूलतों का मुकम्मल इंतजाम किया गया। जिला कलेक्टर ने विजयवाड़ा में इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया ताकि तुलबा को दी जा रही सहूलियात और एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाया जा सके। Today 10th standard public exam started in across the state in NTR district. So we are prepared. We have 149 centers and about 27,360 students are attending for the examinations today. So they are all well prepared through a rigorous 100 days action plan. So they are preparing and they are very confident. Just interact with the students and they are all already seated in their rooms, and the exam is going to start sharp at 9:30. So no absentees is found, and we can see the confidence in the eyes of the students, and they are very well prepared. They are all doing well. This time we are expecting very good result in our district also. Across the district also, everywhere the preparedness is up to the mark, especially with respect to the summer, ensuing summer, the drinking water facility, medical facility, ORS, everything is being arranged in all the centers, and candidates are guided to come. आंध्र प्रदेश में एसएससी इम्तिहानात के आगाज के साथ ही रियासत भर के इम्तिहानी मराकज़ पर सुबह से गहमा गहमी देखी गई है। तुलबा अपने वालिदैन के साथ मुकर्ररा वक्त से पहले ही मराकज़ पहुंच गए हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के मुताबिक इम्तिहान दिन 9:30 बजे शुरू हुआ और दोपहर 12:45 तक जारी रहा। रियासत भर में 3,415 मराकज़ पर इम्तिहानात मुनक्किद हो रहे हैं। हुक्काम ने बताया कि इस साल 6,40,916 तुलबा ने इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें 3,28,000 से ज्यादा लड़के और 3,12,000 से ज्यादा लड़कियां शामिल हैं, जबकि 18,000 से ज्यादा प्राइवेट उम्मीदवार भी इम्तिहान दे रहे हैं। नेल्लूर में तुलबा को आज दिन 9 बजे के बाद सख्त तलाशी के साथ मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त दी गई, जबकि खुसूसी हालात में ताखीर से आने वाले तुलबा को भी मुकर्ररा वक्त तक दाखिले की सहूलत दी गई। अमरावती में रियासत आंध्र प्रदेश के बानी रहनुमा पुट्टी श्री रामुलु के 58 फीट बुलंद कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी गई। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने इस मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इसे स्टैच्यू ऑफ सैक्रिफाइस का नाम दिया गया। इस मौके पर नायब वजीर आला पवन कल्याण, वजीर IT नारा लोकेश, बीजेपी के रियासती सदर PVN माधव, रियासती वज़रा और आला हुक्काम मौजूद थे। वजीर आला ने कहा कि पुट्टी श्री रामुलु ने आंध्र रियासत के क़याम के लिए अपनी जान कुर्बान की है और ये मुजस्समा उनकी अजीम कुर्बानी की यादगार के तौर पर नस्ब किया गया। इन्होंने कहा कि जिस तरह दुनिया में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसी तरह आंध्र प्रदेश में अब स्टैच्यू ऑफ सैक्रिफाइस रियासत की शनाख्त बनेगा। ये यादगार पुट्टी श्री रामुलु की 125वीं जयंती के मौके पर अवाम के नाम की गई। ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించిన పేరు స్టాచ్యూ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్. స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ఉంది, స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్టాచ్యూ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ ఉంది. అలాంటిది ఈరోజు మనం చేసుకోవడం. ఈరోజు మీరు చూస్తే 6.8 ఎకరాలు జూలై 14న సరిగ్గా ఏడాది అయింది. అదే మరి ఫౌండేషన్ వేశారు లోకేష్ గారు వచ్చి సెప్టెంబర్ 3. అక్కడి నుంచి మీరు చూస్తే 6 నెలల్లో మొదటి దశ ప్రారంభించాం. 42 టన్నుల కాంస్యం, 26 టన్నుల కాంస్యం, 42 టన్నుల ఐరన్ స్ట్రక్చర్, రాత్రింబగుళ్ళు పనిచేసిన కళాకారులు, వీళ్ళందరికీ మరొక్కసారి అభినందనలు, మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మనం ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కొత్త జనరేషన్ వచ్చారు. నేను కూడా 1950లో పుట్టాను. తర్వాత 2 ఏళ్లలో పొట్టి శ్రీరాములు గారు త్యాగం చేశారు. ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళైతే ఆయన పుస్తకాలు చదువుకొని ఆయన ఏ త్యాగాలు చేశారో మనం నేర్చుకునే పరిస్థితికి వస్తున్నాం.
ఆ రోజు మద్రాస్ ఉమ్మడి రాష్ట్రం. ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అనేక సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నాం. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే इस मौके पर वजीर नारा लोकेश ने कहा कि पुट्टी श्री रामुलु कुर्बानी की जीती जागती मिसाल थे और उनकी याद में नस्ब किया गया स्टैच्यू ऑफ सैक्रिफाइस आंध्र प्रदेश के वकार की अलामत है. ఆత్మగౌరవం ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ దొండి రాకేష్ వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి అన్న విగ్రహానికి ఏం పేరు పెడితే బాగుంటుందని ఆయన నన్ను అడిగారు. అప్పుడు నా మనసులో నేను ఆలోచించి ఎవరి త్యాగమైతే తెలుగు జాతి శాశ్వతంగా గుర్తుపెట్టుకుంటారో ఆ త్యాగమూర్తియే పొట్టి శ్రీరాములు గారు. అందుకే స్టాచ్యూ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ పేరు పెట్టాలని నేను కోరటం జరిగింది. ఈ విగ్రహం తెలుగు జాతి గొప్పతనం ఏంటో అమరావతి నుంచి జాతికి స్థాయికి తీసుకెళ్తుందని ఈ సభాముఖంగా నేను కోరుతున్నా. నేను తెలుగువాడినని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నా. ఆ గర్వం మనకు అందజేసిన గొప్ప వ్యక్తి అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారు. ఆయన ప్రాణ త్యాగమే మన రాష్ట్రం. ఆయన జయంతి మనందరికీ ఒక పండుగ. राज्यसभा में बीजेपी के रुकन के लक्ष्मण ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तेलंगाना और आंध्र के 32 ओबीसी जातों को मरकजी फहरिस्तों में शामिल किया जाए ताकि उन्हें रिजर्वेशन के फवायद हासिल हो सकें. जीरो आवर के दौरान ये मसला उठाते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की 27 और आंध्र प्रदेश की 5 जातों को सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का मुतालबा तवील अरसे से किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पहले ही उन जातों को मरकजी फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश कर चुका है. The long-standing demand for the inclusion of several OBC castes from Telangana, Andhra Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra into the central OBC list, sir. So the National Commission for Backward Class has already advised the Union Government recommending the inclusion of this, particularly in Telangana, 27 castes and 5 castes from Andhra Pradesh to consider to include in central OBC list, sir. However, the matter of grave concern is these 27 and 5 castes of both the states, though they are in the states list as OBCs, despite their social, educational and economical backwardness, they are not being now treated as OBCs in union government and central education and union government job opportunities. As the state level, they are getting their due share as OBCs to their respective percentages in their respective states. But when it comes to central, to have a job in central universities, railways, telephones, and even to procure a seat in IIT, where the quality education is being provided by the Modi ji government. And first time after Modi ji came to power, he has given 27% reservations in education institutions to all the OBCs, sir. Whether it is Kendriya Vidyalaya, Navodaya Pathshala, Sainik schools, or law universities, even in NEET, first time the MBBS seats are also been increased to maximum extent. But unfortunately, आंध्र प्रदेश में 15 अप्रैल के बाद वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी का अमल शुरू किया जाएगा. बीजेपी के रियासती सदर PVN माधव ने विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही. उन्होंने कहा कि SIR के तहत नई इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी अमल में लाई जाएगी और तमाम मराहिल मुकर्ररा उसूलों के मुताबिक मुकम्मल किए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे अमल में हिस्सा ले रही है. We are organizing special intensive revision in Andhra Pradesh. It is coming on after April 15th. So Bharatiya Janata Party Andhra Pradesh is planning to participate in the whole process. And we have already appointed BLA 1, we will be appointing BLA 2, and we will be seeing that all the new voter electoral rolls will be prepared according to the new norms, and all the discrepancies that are there, all the disturbances that are there, that will be going on. We will be having a right polling station for every polling booth. We will be having right person of people in one booth. In so many places, in a single street, people are having 2-3 booths. That will also go, and duplicate votes is also a menace in Andhra Pradesh. Erstwhile government YCP has enrolled lots of duplicate votes, and they have
विजयवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद ने इल्जाम आयद किया है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत एंडोमेंट जमीनों को खानगी इदारों के हवाले करने की कोशिश कर रही है और वीएचपी के नुमाइंदों ने हुकूमत के हालिया हुक्मनामे पर तनकीद की है और कहा है कि मजहबी इदारों की जमीनें अवामी मफाद के लिए होती हैं और उन्हें निजी हाथों में देना मुनासिब नहीं है। एंडोमेंट्स लैंड्स कब्जा इसी एक विषय है आंध्र प्रदेश में, और गवर्नमेंट ने एंडोमेंट्स लैंड दारादत्त करने का एक जीवोस करने का एक विषय है। गवर्नमेंट ने 33 इयर्स का टेम्पल लैंड्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को देने का एक 139 जीवो लाया और अलग अलग टेम्पल्स का लैंड एग्जीबिशन ग्राउंड्स का और गोल्फ कोर्ट का क्रिकेट स्टेडियम को दे दिया और सिंहाचलम लैंड्स ना आईटी पार्क का, गूगल डाटा सेंटर का, कैप जेमिनी का देने का प्रयत्न करते हैं। और तिरुवूर एनटीआर जिला में गंपलगुड़ में एंडोमेंट लैंड्स ने प्राइवेट व्यक्ति को देने का प्रयत्न में गवर्नमेंट था। इसी तरफ कार्यक्रम को रोकने के लिए आज विश्व हिंदू परिषद यावत आंध्र प्रदेश राष्ट्र में एक आंदोलन प्रारंभ करने का प्रकटन करने के लिए इस प्रेस